And now to a story that actually got everyone confused. People are wondering something like this, can it actually happen? And that too in a party that says it is different from everyone else. But now we have a confirmation. The confirmation is that yes, Swati Maliwal was actually assaulted. And this is a confirmation that has come in from the Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP Sanjay Singh. Not just this, he's even mentioning and naming the Chief Minister's PS. He said बहुत गलत हुआ है उनके साथ. But then in the same breath, Sanjay Singh also says that the Chief Minister will take strict action against him. But he is quiet on the fact that who is the Chief Minister to take action? Why has a police complaint not been filed? And the all-important question, what about Arvind Kejriwal? Now, considering that this is Arvind Kejriwal's PS, why has Arvind Kejriwal decided not to speak about it? Where is Swati Maliwal? Is there some kind of a pressure right now being exerted on her to ensure that she does not file a complaint? A lot has happened in the last few hours. Let's quickly get your reactions that have come in. First up from the AAP admitting this assault gate, and then the reaction also from the BJP. कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। 36 घंटे लग गए आम आदमी पार्टी को जवाब देने में। एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है और मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। अगर आप में जरा सी भी गंभीरता होती, जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो संज्ञान लेने की बजाय आप तुरंत पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहते, पुलिस को शिकायत करते। लेकिन आप अभी तक मुंह चुप करके बैठे हैं। खेल इससे बड़ा है। ये सारी घटना मुख्यमंत्री के सामने हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। क्या कारण है कि कल पीसीआर की कॉल के बाद से वो चुप हैं? क्यों राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है? So the BJP is asking the Aam Aadmi Party that is there some kind of pressure right now being used to kind of reach a compromise or a deal? Otherwise, what explains the fact that there has been no police complaint? Let's quickly open up this entire conversation. We have Tom Barakkar, national spokesperson of the BJP, joining us. Gargi Nandi Roy is also a political analyst on the show. Dr. Nikul Patel is leader of the Congress, and Sanjeev Kaushik, who's a political analyst, he's completing our panel. And Sanjeev ji, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री एक तो कौन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एक्शन लिया जाएगा किसी के खिलाफ। एक्शन लेना है तो उनको अभी तक सैक क्यों नहीं किया गया विभव कुमार को? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको 36 घंटे लगते हैं संजय सिंह को ये बयान देने में, अरविंद केजरीवाल क्यों खामोश है? देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री एक्शन क्यों नहीं लेते हैं या कौन होते हैं एक्शन लेने के लिए, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बाकी बाहरी लोग कौन होते हैं एक्शन लेने के लिए कहने वाले, जबकि स्वाति मालीवाल ही कुछ नहीं बोल रही हैं।
नहीं, किस तरह की रुकिए परिस्थितियों में नहीं, वहाँ पे संजीव क्या हुआ? जी देखिए, आपने ये शुरुआत ही गलत की है। एक महिला अगर ये अलेज करती है, और वो भी एक राज्यसभा एमपी है, और कोई भी महिला अगर ये अलेज करती है कि वो कहीं जाती है, उनके साथ असॉल्ट हुआ है, तो क्या एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप उस महिला को कमजोर आंकती हैं क्या? आप उस महिला को इतना कमजोर आंकती हैं कि किसी थर्ड पर्सन के आप उस महिला पर एक्शन लेने विश्वास के करते हैं या नहीं इंतजार में वो बैठी रहेंगी? सर, आप अपनी ही राज्यसभा एमपी पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? मैंने कहा कि 100%। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये खुल के इस पर पीसी की है और ये बात कही है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। उनके साथ जो अभद्रता की गई है, इस मामले में जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर एफआईआर नहीं, संजीव कौशिक जी, देयर इज अ लॉ सर, देश में आईपीसी है, ठीक है, उस कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए, जो सेक्शंस, जो धाराएं लगनी चाहिए उसके खिलाफ एफआईआर। तो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर क्यों नहीं कराई है अभी तक? मैंने कहा कि सबसे पहले तो जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं उस महिला से भी पक्ष जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये बताइए आप। वो जाती है ना, पुलिस स्टेशन वो गई है या नहीं गई? और आप तो कहते हैं कि आप उन पर विश्वास करते हैं। या तो आप देखिए, आप मुझे या तो ये बोलिए कि आप उस वर्जन को बिलीव नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 36 घंटे की बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्या 36 घंटे लग गए दिल्ली पुलिस को उस महिला तक पहुंचने में? यदि उस तरह की कोई कद्दावर महिला, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि वो किसी के भरोसे या किसी थर्ड पर्सन के भरोसे बैठने वाली महिला नहीं है। अरे वो सक्षम है, कद्दावर है, संजीव जी, आपको याद है जब महिला रेसलर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट करती थी, स्वाति मालीवाल ने कितनी बार उस पर ट्वीट किया है, वो उनसे मिलने तक गई थी। तब भी आप कह सकते हैं कि महिलाएं सशक्त है, अपने आप एक्शन होगा, दिल्ली पुलिस पे सब छोड़ देते, लेकिन तब आपने राजनीति खेली। लेकिन अब जब आप ही की राज्यसभा एमपी इस तरह के संगीन आरोप लगा रही हैं सर, एंड ऑल दिस हैपनिंग राइट इन द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, अगर देखिए, नहीं संजीव जी, I will open this up. I'll also get Nikul of the Congress to respond to what he has just done. Now, Nikul Patel, do you, Gargi, just allow me a minute, because I just want to see where does the Congress stand on this. When we spoke, to a lot of Congress leaders, including Udit Raj yesterday, he said this is a trick from the BJP scam. But today the AAP is admitting, Nikul Patel itself, that this happened. So are you okay with no action against Bibhap Kumar? Are you okay with the Chief Minister's silence? No, definitely not, because any incident happening with a woman at a place should be definitely taken seriously. And if the victim herself is a member of parliament, then she must go and she has called the police, and now her job is to first file a complaint on her own. If any political pressure is there, then definitely the Aam Aadmi Party should take a cognizance and allow her to do whatever she wants, because any misbehave with the woman is not to be tolerated anyhow in the country. So that is what always the Congress believes. Somewhere I'm getting a sense that you want to put the onus just on Swati Maliwal. Now, I know that this is, a conspiracy theory till we hear from Swati Gargi herself, because there are a lot of people indicating that perhaps some kind of a settlement or a compromise is being worked out right now to ensure that Swati does not go out to the police, does not file a complaint, Nikul. Should the Chief Minister himself not go forward and say that we must have an FIR against Bibhap Kumar? Why is that not happening, Nikul? And then Gargi, you can respond. Definitely, Kejriwal ji as a chief minister, and if any incident is happening at his own residence, then he must ask even Swati Maliwal to go further and file the complaint, because the ultimate IPC, the victim has to come with an official complaint, and then the police can conduct whatever inquiry or See, whatever that is the problem, Nikul. That is the problem. Matter. Your response to anything will depend on which side of the political aisle you are. When you hit out at the BJP, you say suo moto action होना चाहिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा ले, प्रधानमंत्री एक्शन ले. लेकिन जब अपने पे आती है, your standards will change. But Gargi, is the yes, Nikul, let me now get in both Tom and Gargi here. Gargi, how do you respond to what you have seen happening and unraveling in the last few hours?
Yes, thank you for inviting me, Dipti. See, Dipti, firstly, it is really not believable that Swati Maliwal was assaulted by the CM's PA, Arvind Kejriwal's PA, without the knowledge of the CM. It is not possible. It happened in the drawing room of the CM. And when such attack happened, she made 2 calls. So immediately there should be an FIR under section 509 against Bivat Kumar. 509 is word, gesture, action intended to outrage the modesty of a woman. She went to the police station, could not file an FIR. Why? It is obvious that there was a pressure created on her. And Swati, the thing is, Arvind Kejriwal is a person in the politics who entered politics claiming to be an epitome of righteousness, and we have seen how many times he has flipped. He has flipped faster than a gymnast and changed colors faster than a chameleon. And now we see this. This is really unbelievable. And 36 hours after what Sanjay Singh did, it is too little and too late. Imagine if this would have happened in any BJP leader's home. What would have happened? Entire AAP would have been on the roads of Delhi asking for resignation of that leader and Prime Minister. Okay, So, but Gargi, why was Gargi, I think you this make a fair happening? Why point. did You Swati make a Maliwal fair in the first point, place and go? I partially Then- agree with you there that political parties respond to situation depending on whether that suits them or not. But Tom, are you guilty of playing politics? You know, this is a matter that has to be dealt with very, very sensitively. Why is the AAP saying that the BJP is behind all this, and you never know Swati Maliwal could, soon jump the ship and join the BJP? What is the BJP connection in all this? There is no connection. There's 2 telephone calls, PCR calls to the police station. And in both the calls, the chief minister's name is there. Now the question is, under law of torts, master is liable for the acts of the servant. And here is a man who is a vicarious liability. And he has to face the music. And why is she not filing a complaint or signing against a complaint? She is under pressure. What kind of pressure is it that they are imposing on her? Where is BJP playing into it? This is an act committed in the chief minister's residence, Sheesh Mahal, with the entire place under CCTV viewership. Why are those tapes not coming out? The question here is the chief minister to go to jail before the number of days he's given bail? Because this is an act, an omission committed against a woman. And this PS or private secretary or personal assistant, if he has acted at the behest of the chief minister. There are many rules. Okay, Tom, let me complete. you are also making a huge charge, something that Gargi also said, that all this happening cannot happen without not just the knowledge but the consent of Arvind Kejriwal. So, this is why Sanjeev Kaushik ji and Nikul Patel, it becomes all the more important for the chief minister to speak. But because he decided not to speak and he decided to let Sanjay Singh speak after 36 hours, is raising a lot of questions. Tom, I'll allow you to complete your point on the other side of this quick break, and we continue to figure where is Swati Maliwal, where is the entire mystery behind the entire story, and what really is being happening. Why is the Chief Minister quiet? On the other side of this quick break. Welcome back. So we are asking that if there has been an admission that yes, there has been that misconduct and alleged assault by the Chief Minister's PS, that too happening right inside his residence, why has there been no official FIR filed yet? We continue to have Tom Vadakkan, Gargi Nandi Roy, Dr. Nikul Patel and Sanjeev Kaushik with us. And gentlemen, because we have limited time, I'm requesting Gargi and all of you to just keep your point limited so everyone gets a word in here. Sanjeev Kaushik ji, in hindsight, आपको नहीं लगता कि अगर अरविंद केजरीवाल इस समय जाकर एक FIR करते हैं तो बेहतर होगा? नहीं तो देखिए, दिल्ली के चुनाव अब सर पर है और भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल की असलियत सामने आ गई है। देखिए दीप्ति, सारी कहानी हमें क्या लगता है, सूत्रों से मिली खबर, क्या करना चाहिए, कौन सी धारा लगनी चाहिए, खबर ही जब पुष्ट नहीं हो पा रही है तो किस आधार पर कौन सी धारा लगनी चाहिए और जेल में डालने नहीं, संजीव जी, क्या आप अभी भी ये मानते हैं सर कि जो संजय सिंह कहते हैं वो भी झूठ है? संजय सिंह ने तो ये माना है ना कि ये असॉल्ट हुआ है।
हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे पार्टी अपना निर्णय लेगी कि क्या करना है, कैसे पार्टी क्यों निर्णय लेगी? कई बार छोटी मोटी बात, देश में कानून है निकुल, देश में कानून है ना, तो पार्टी या पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे निर्णय लेंगे? यही तो मैं जानना चाहती थी निकुल। Kejriwal ji and Maliwal ji should held a joint conference, make people aware what had happened, and Why? This is weird. must This is file a weird. police complaint immediately. Exactly, You are not ready exactly to what listen. No, Tom I'm and explaining the Gargi thing. were alluding You are not to. ready to listen. Why do you want Swati Maliwal to be holding a press conference with Arvind Kejriwal and tell us कि सब कुछ हो गया है, deal हो गई है निकुल? That's unfair. अब I'll let Tom respond to this quickly. Tom. Yeah, this is a very strange kind of a press conference. This, as you, Deepthi, as you rightly described, that deal is struck. That will be the message that will go. But let me tell you something. This lady has been very brave enough to be in the middle of the night on the streets of Delhi with the camera team, and there were cars that were parked near her or whatever. Yes. And she came back and said law and order is bad in Delhi. Yes. Now look at the karmic circle. She goes to the chief minister's house and gets manhandled, or should I call it woman handled? Yes. Tom, I remember exactly what you're saying, and sincere apologies to you that I interrupted, and apologies to also Gargi. I've completely run out of time, but Times Now will continue to track that story and see what happens next. Thank you to all of you for joining us.